दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नताशा कोवे है और मैं आपका मेरे चैनल पे स्वागत करती हूँ। पिछले वीडियो में हमने यूपीएससी सीएससी का पेपर 1 ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटनरी साइंस देखा था। सो आज की वीडियो में हम उसी वीडियो को कंटिन्यूशन करेंगे और आज के इस वीडियो में हम पेपर 2 देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले होता है एनाटॉमी, फिर फार्माकोलॉजी एंड हाइजीन। सो पहला है हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजिकल टेक्निक्स, फिक्सेशन, casting, then staining and etc. Paraffin embedding technique, infiltration, ये होता है infiltration of paraffin into tissue. HE, hematoxylin and eosin stain होता है, जो स्टेनिंग के लिए काम होता है. नेक्स्ट है स्टेनिंग, फ्रीजिंग माइक्रोटोमी, माइक्रोस्कोपी, ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, साइटोलॉजी. साइटोलॉजी स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है सेल का. ओके, फिर स्ट्रक्चर ऑफ सेल, स्ट्रक्चर ऑफ केस, साइटोप्लाज्म एक्सेट्रा. नेक्स्ट है ऑर्गेनेलिस एंड इंक्लूजन. ऑर्गेनेलिस में आते हैं गोल्गी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया एक्सेट्रा. देन आता है सेल डिवीजन, सेल टाइप, टिश्यू, टिश्यू में आता है एपिथेलियम, क्लासिफिकेशन जैसे सिंपल, कॉलमनार, स्ट्रैटिफाइड एक्सेट्रा. Then embryonic and adult tissues. Comparative histology of organs. Vascular, you may be knowing arteries, veins. Nerves में brain, spinal cord. Then आपको बताऊंगा digestive में gastric lumen. Respiratory में lungs, parenchyma. Musculoskeletal में cartilage, bone, etc. Urogenital system में kidney, bladder, ureter, etc. Then endocrine glands, integuments, sense organs. Sense organ आपको पता होगा eyes, skin, etc. ये हो गए सेंस ऑर्गन. तो ये हमारा हिस्टोलॉजी एंड हिस्टोलॉजिकल टेक्निक कंप्लीट होता है. नेक्स्ट आता है एम्ब्रियोलॉजी. एम्ब्रियोलॉजी ऑफ वर्टिब्रेट्स विद स्पेशल रेफरेंस टू एव्स, डोमेस्टिक मैमल्स, गैमेटोजेनेसिस, फर्टिलाइजेशन, जर्म सेल जैसे कि एंडोडर्म, मेसोडर्म. Then fetal membranes, placentation, types of placenta. Types of placenta में आपको पता होगा diffuse, discoid, zonary, cotyledon. In domestic mammals, teratology, twins, twinning, organogenesis, geometric derivatives, endodermal, mesodermal and ectodermal derivatives. Anatomy में आता है regional anatomy, paranasal sinuses, fox, surface anatomy of salivary glands, regional anatomy of infraorbital, maxillary, mandibular, alveolar, mental, corneal nerve block. You may be knowing corneal nerve block is for amputation of horn. Then regional anatomy of paravertebral nerves, pudendal nerve, medianal nerve, radial nerves, tibial, fibular, digital. Then cranial nerves, structures involved in epidural anesthesia. You may be knowing first, second coccygeal vertebrae पे करते हैं. Then superficial lymph node like parotid, prescapular, prefemoral, etc. Then surface anatomy of visceral organs of thoracic, abdominal, pelvic cavities, comparative features of locomotor apparatus, their applications in the biomechanism of mammalian body. Then this was of bovine anatomy. Next, anatomy of fowl. Then इसमें आता है musculoskeleton system. So anatomy of fowl में आपको पता होगा
skull, vertebra, sternum, ribs, etc. ये आता है एनाटॉमी फॉर्म में. मस्कुलोस्केलेटन में आता है जैसे क्लाविकल, कोराकॉइड, कैपुला, etc. Then functional anatomy relation to respiration, flying. So respiration में ये air sac होते हैं, इसमें 9 sacs होते हैं. And flying, then digestion में आपको बताऊंगा proventriculus, prop, gizzard, ये सब डाइजेशन के पार्ट है. देन एग प्रोडक्शन में यू नो शेल मेम्ब्रेन, yolk, albumin, etc. देन नेक्स्ट आता है फार्माकोलॉजी. नेक्स्ट है फार्माकोलॉजिकल एंड थेरापेटिक ड्रग्स. सेलुलर, सो फर्स्ट है सेलुलर लेवल ऑफ फार्माकोडायनेमिक्स. फार्माकोडायनेमिक्स में आपको बताऊंगा रिसेप्टर्स, आयंस, कैरियर्स, enzymes. So this all comes in pharmacodynamics. Pharmacokinetics में आता है absorption, distribution, metabolism, excretion. Then drugs acting on fluids and electrolyte balance. Drugs acting on autonomic nervous system. Modern concepts of anesthesia. You know there are 4 stages of anesthesia. Then you use barbiturates, chloral hydrates. Dissociative anesthesia, use ketamine. Then autocoids, you know autocoids, histamine, antihistaminic. Then 5-hydroxytryptamine. So this all comes in autocoids. Antimicrobial, principles of chemotherapy in microbial infection, use of hormones in therapeutic, chemotherapy of parasitic infections. So yeah, hormones में हम use करते हैं insulin, growth hormone, then etc. Then parasitic में हम use करते हैं anthelmintic, antiprotozoal, etc. Drugs and economic concerns in the edible tissue of animals. Chemotherapy of neoplastic disease, like we use vincristine, vinblastine. Then drugs, insecticides, plants, metals, non-metals, zootoxins, and mycotoxins. Next come veterinary hygiene with reference to water, air, and habitation. Assessment of pollution of water, air, soil, importance of climate and animal health, effect of environment on animal function, performance, relationship between industrialization and animal agriculture, animal housing requirement for specific categories of domestic animal, that is pregnant cows, sows, milking cows, broiler breed, stress, strain, and productivity in relation to the animal habitation. So this was all in anatomy, pharmacology, and hygiene. Next है animal diseases. Etiology, epidemiology, pathogenesis, symptoms, postmortem lesions, diagnosis, and control of infectious diseases of cattle, sheep, and goat, horses, pig, and poultry. So infectious, you may be knowing FMD, anthrax, brucella, rinderpest, EPR, BQ, etc. Next है etiology and epidemiology, system diagnosis and treatment of production disease of cattle, horse, pig, and poultry. So production में आता है mastitis, ketosis, etc. Then deficiency disease of domestic animals and bird. Deficiency में you will know rickets, osteomalacia, pica. For birds, you may be knowing polyneuritis, pernicious anemia. Then diagnosis and treatment of non-specific conditions like impaction, bloat, diarrhea, indigestion, dehydration, stroke, poisoning. Then diagnosis and treatment of neurological disorders like encephalitis, meningitis, etc.
Principle and methods of immunization of animal against the specific disease herd immunity. So you may be knowing immunity होता है innate, होता है acquired. Disease free zone, zero disease concept. तो यहाँ होता है compartmentalization. Right. Then chemoprophylaxis. Next है anesthesia. Anesthesia, we know 4 stages of anesthesia. Local, we use lignocaine. For regional, there are nerve blocks. Generals, we have general anesthetic drugs. Pre-anesthetic, we use atropine, largactil, sequel, etc. The symptoms and surgical interference in fractures, dislocation, hernia, choking, abomasal displacement, cesarean operation, rheumatommy castrations. So this is all anesthesia surgery. Then next is disease investigation techniques. Material for laboratory investigation, establishment of animal health centers, disease-free zones. So this was all in animal diseases. Next come veterinary public health. First is zoonosis. What is zoonosis? It is transmission of disease from animal to human or from human to animal. Then its classification, definition, role of animal and bird. These act as carriers. Birds are, migratory. Causes transmission. Acting as vector. And prevalence and transmission of zoonotic disease. Then occupational zoonotic disease आपको पता हो गया anthrax, brucella, leptospirosis, and various etc. Then epidemiology, principle, definition of epidemiological terms, application of epidemiological measures in the study of diseases, disease control, epidemiological features of air, water, foodborne infections, OIE, regulations, World Trade Organization, sanitary and phytosanitary measures, veterinary jurisprudence. In this, we know rules, regulations for improvement on animal quality, prevention of animal diseases, state and central rules for prevention of animal and animal product-borne diseases, SPCA, veterinary legal cases, certificate materials, poisons, cyanides, etc. Methods of collection of sample. For example, we collect blood, brain, liver, hair, etc. The next is milk and milk product technology. So first is market milk, then quality. Quality में आता है acidity, then specific gravity. फिर आता है freezing point, etc. Then होता है testing and grading of raw milk. Testing में आता है जैसे कि smell, appearance, temperature, etc. तो ये आता है टेस्टिंग में और इस हिसाब से किया जाता है ग्रेडिंग. प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, स्टोरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग, डिफेक्ट्स एंड द कंट्रोल, प्रिपरेशन ऑफ द फॉलोइंग मिल्क्स. जैसे कि पाश्चराइज मतलब क्या होता है, हम इसे हीट करते हैं मिल्क को 63 डिग्री सेल्सियस पे 30 मिनट्स के लिए एंड 72 डिग्री सेल्सियस पे 15 मिनट्स के लिए. देन स्टैंडर्डाइज, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं SNF and fat. Okay, we call adjustment. Then toned, double tone, इसमें से removal of fat. एक sterilized milk को हम हीट करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पे. होमोजेनाइज्ड, इसमें क्या होता है, ब्रेकअप होता है फैट ग्लोबुल्स का. रिकॉन्स्टिट्यूटेड में हम मिल्क पाउडर को वाटर में डाल के उसे रिकॉन्स्टिट्यूटेड मिल्क बनाते हैं. देन रिकम्बाइंड फ्लेवर्ड मिल्क में हम उससे फ्लेवर एडिशन होता है. राइट. फिर प्रिपरेशन ऑफ कल्चर्ड मिल्क, कल्चर्स एंड द मैनेजमेंट, योगर्ट, दही, लस्सी, श्रीखंड,
preparation of flavored and sterilized milk, legal standards, sanitation requirement for clean and safe milk, for मिल्क प्लांट इक्विपमेंट्स, ये सब हमें देखना है मार्केट मिल्क और मिल्क में। नेक्स्ट है मिल्क प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी, इसमें हम सिलेक्शन करते हैं रॉ मटेरियल, उसका प्रोसेसिंग करते हैं, स्टोरिंग करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिंग एंड मार्केटिंग मिल्क प्रोडक्ट्स जैसे क्रीम, बटर, घी, खोआ, चना, चीज, कंडेंस्ड, इवापोरेटेड, ड्राइड मिल्क, बेबी फूड, आइसक्रीम, कुल्फी, बाई प्रोडक्ट्स, वे प्रोडक्ट्स, बटर मिल्क, लैक्टोज केस है, इसमें हम टेस्टिंग, ग्रेडिंग, जजिंग करेंगे मिल्क प्रोडक्ट्स का। BIS और एग मार्क जो ये अथॉरिटी है, अथॉरिटी सर्टिफिकेशन रहेगा इसमें। देन उसके बाद लीगल स्टैंडर्ड्स, क्वालिटी कंट्रोल, न्यूट्रिटिव प्रॉपर्टीज, पैकेजिंग, प्रोसेसिंग, ऑपरेशनल कंट्रोल, देन कॉस्टिंग ऑफ अ डेयरी प्रोडक्ट। सो ये होता है मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक होता है मीट हाइजीन एंड टेक्नोलॉजी। तो पहला है मीट हाइजीन, इसमें हम करेंगे सबसे पहले एंटीमोर्टम केयर एंड मैनेजमेंट। सो एंटीमोर्टम हम क्यों करते हैं, ताकि हम देख सके कुछ डिजीज जैसे एक्टिनोमाइकोसिस, एक्टिनोबैसिलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस एक्सेट्रा जो डिजीजेस है वो हम एंटीबॉटम में देख सकते हैं। देन मैनेजमेंट ऑफ फूड एनिमल्स, स्टनिंग। स्टनिंग क्या होता है, ये ह्यूमन मेथड है एनिमल को अनकॉन्शियस करने का स्लॉटर के पहले। देन ये स्लॉटर, स्लॉटर में वेरियस टेक्निक है जैसे जूश, मुस्लिम, झटका एक्सेट्रा। देन ड्रेसिंग ऑपरेशंस, abattoir requirements and design, meat inspection procedure, judgment of carcass, meat cuts, grading of the carcass. Grading are like prime, good, choice, commercial. These are various grades of carcass meat cuts. Then duties and functions of veterinarians in wholesome meat production. It is at farm level or as market level. So this is duty of veterinarian. Then hygienic method of handling production of meat. Spoilage of meat. Spoilage में क्या हो सकता है, rancidity, putrefaction, discoloration, etc. These all things come in spoilage of meat. फिर उसके control measure, post slaughter physico chemical changes में आपको पता होगा राइगर मोटिस होता है. Then changes in meat and factors that influence them, quality improvement methods, adulteration of milk. यहाँ पे adulteration mixing होता है cheap quality meat, high quality meat में, and detection, regulatory provisions in meat trade and industry. The next है meat technology, तो physical chemical characteristics. Physical characteristics में जैसे उसका water holding capacity, marbling, etc. Chemical properties में आता है protein, fat, minerals, etc. Then meat emulsion, methods of preservation of meat like curing, canning, irradiation, packaging of meat and meat products, processing, formulations, byproducts, slaughterhouse byproduct, the utilization, edible and inedible byproducts, social and economic implication of proper utilization of slaughterhouse byproduct, organ products for food and pharmaceuticals. फिर है poultry products technology. इसमें केमिकल कॉम्पोजिशन, न्यूट्रिटिव वैल्यू देखना है पोल्ट्री मीट का, प्री स्लॉटर केयर एंड मैनेजमेंट करना है, स्लॉटरिंग टेक्निक्स, इंस्पेक्शन, प्रिजर्वेशन ऑफ पोल्ट्री मीट प्रोडक्ट्स, legal and BIS standards. Then structure and composition, nutritive value of eggs. So you may be knowing that new biological value is the highest in poultry eggs. Then microbial spoilage, preservation, maintenance, marketing of poultry, meat, eggs, products, value-added meat products. Next, last topic is rabbit or fur animal farming. So first is rabbit meat production, then disposal, utilization of fur and wool, and then recycling of waste byproducts, grading of wool. So this was all in paper 2. So you may watch the video again and get a clarity about the syllabus
and I request you to learn the syllabus so that it becomes comfortable for you while choosing veterinary science as an option. So I hope you like this video. So if this video was some help to you, you may like, share the video with your friends, subscribe to the channel if you haven't, and press the bell icon so that next time I upload the video, you'll get the notification. ऐसे ही वेटनरी साइंस रिलेटेड और वीडियोस मैं इस चैनल पे लाती रहूँगी. सो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग